ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे? Very good evening, guys. So, hello everyone. I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. Ma'am, OSSC. कौन हैला OSSC? साइट ओपन होनी तो सर्वर प्रॉब्लम अच्छी कहीं व्यस्त हो जदि साइट तुम मानकर ओपन हबनी ताहले तुम मानकर एप्लिकेशन अप्लाई करिवार डेट भी एक्सटेंड हबो डोंट वरी अबाउट दैट मैम मते एडमिन पावर दियंतु खाली बळे जे गपिबो डायरेक्ट ब्लॉक इग्नोर जल्दी जल्दी टिके जॉइन हुआ so that हमें क्लास स्टार्ट करि परिबा टुडे आई एम नॉट इन ए गुड हेल्थ बट स्टिल आई एम टेकिंग योर क्लासेस सो टिके कोऑपरेट करिवो आई विल लाइक दिस इन द लोअर वॉइस होप अपन मन किछि प्रॉब्लम होबनी व्यस्त हुअनी जो मानकर फॉर्म डिले अछि ओडब्ल्यूसी साइट ओपन होउनी से मानकर एक्सटेंशन आपनकर बढ़िसिबो डोंट वरी हैला तम समस्तिंकु अगेन हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी पोंगल हैप्पी लाइक एज आउ कोन अछि आपनकर लोरी अछि हैप्पी उत्तरायण एवरीथिंग स्टार्ट करिबा क्लास असंत फर्स्ट थिंग जानी रखंतु महापैक रो प्राइस रहिछि 3999 जदि आपण माने 3999 नौचंदी वैलिडिटी तो 2 ईयर पाइबे ता सहित जेति को वन डे एग्जामिनेशन आपण माने देखुचंदी जहार स्पेसिफिक वैलिड माने वैलिडिटी ईच आपनकर 1 ईयर रहउची whereas जदि आपण माने महापैक नौचंदी हियर योर प्राइस विल बी नॉमिनेटेड लाइक नॉमिनल प्राइस तो रहउची ता सहित माने रखंतु जो 999 हैला 1199 हैला 1499 हैला सब ऐड कला पर आपनकर यार जस्ट डबल ट्रिपल अमाउंट आसी जियो बट स्टिल आपण माने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रे जॉइन करि परिबे एंड केते ना 2 इयर्स रा वैलिडिटी सहित हैला वेरी गुड इवनिंग चित्त आसो तो नेक्स्ट आपण माने जदि सिविल सर्विस पई भी प्रिपेयर करूछंती आपण माने अधिकारी बैच नै परिबे एटा आपनकर ओनली प्री जो माने प्रिपेयर करबा को चाहउचंती से माने प्री बैच नै परिबे दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग लाइक 2025-26 बैच दे कैन परचेज द बैच वैलिडिटी 1 ईयर एंड प्राइस होचे 6999 जो माने अधिकारी पी प्लस मेंस नेबा को चाहउचंती 2025-26 से माने 1.5 वर्ष वैलिडिटी सहित 11999 नै परिबे रेस्पेक्टिव अलग किछि सोर्सेस आपन मानकर बैचेस रो जेंति कि मेंस बैच 24-25 रो जोडा कि आपन करे हेबा को जाउछि मेंस ऑलरेडी जो माने प्रीलिम क्वालिफाई करिसंती से माने मेंस बैच भी नै परिबे देयर इज द हेल्पलाइन नंबर आपन माने कॉल करी कि एठू हेल्प पाई पाइबे
आफ्टर दैट जदि टीचिंग एग्जामिनेशन पाई स्टूडेंट्स प्रिपेयर आपण माने करूछंती आपण माने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स केही भी प्रिपेयर करूछंती ताले आपण से माननकु भी ताको रेफर करि परिबे द्रोण बैच रे जॉइन हेबा पाई दैट इज फॉर द एसएसबी टीजीटी स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी टीजीटी 1 ईयर वैलिडिटी सहित द्रोण बैच नै परिबे प्राइस इज 1499 यदि आपण माने प्रारंभ बैच नोसंती जेटी और 80 बैच 1 ईयर वैलिडिटी सहित 1199 या फिर यदि संस्कृत रो स्पेशल पेड बैच चाहुचंती ताहाले 1 ईयर वैलिडिटी सहित आपण मानकु 1499 ने मिल जिवो आउट ऑफ दैट हियर इज योर हेल्पलाइन नंबर आपण माने कॉल करिकि हेल्प पाई पारे फर्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी चली थिला काली किछि क्वेश्चन डिस्कस करी थिले आज आउ किछि क्वेश्चंस डिस्कस करिबा गेट रेडी फॉर दैट फर्स्ट क्वेश्चन As per Köppen's classification, what is the main climatic classification of the most part of Odisha? तो Köppen विषय आपण मानकु कहिथिली तो Köppen हेले त माने कोन कहबो कहिथिली क्विक हो ना क्लास रे छु मु कथा होजी सले राइट आंसर कौन होची ऑप्शन सी होची ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट हबनी एएफडब्ल्यू हबनी एएमबी हबनी ट्रॉपिकल सबन्ना बोली आमे ताको कोची बी कोथि पई रितेश कोथि पई बी ऑप्शन आसिला एएम केमति आसिला आपनकर ट्रॉपिकल मानसून आडको काहे कि गले आपण मानकु तो मु बार बार कहिथिली सी भी अछि आपनकर ऑप्शन रे कोन आसीबो रितेश व्हाई दिस कोलाबरी डी ट्रॉपिकल सबन्ना आसीबो दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए distinct wet season during the monsoon and a prolonged dry winter season. High temperatures are observed throughout the year. This description accurately matches the climate patterns experienced in most of Odisha, which has prominent monsoon season and dry winters. That means apanakar rainy season re rainy हुए, winter season re shita हुए and apanakar summer season re khara हुए. Okay? Oh, आसा तो आपनकर जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन तो कोपेन्स कर ना कोन थिला ना व्लादिमीर कोपेन्स थिला तांको सिस्टम अकॉर्डिंग आपण मान जानि संती कहा को नै कि से डिस्टिंग्विश करथिले डिफरेंशिएट करथिले डिफरेंट क्लाइमेट को कोन सेपरेट करथिले ना अकॉर्डिंग टू द टेंपरेचर एंड द प्रेसिपिटेशन टू कैटेगराइज द क्लाइमेट्स आपण मान जानि संती ट्रॉपिकल सबन्ना थिला हमर ओडिसा पई डिनोटेड दैट ए स्टैंड्स फॉर द ट्रॉपिकल एंड आपनकर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द ड्राई विंटर तो एई दीटा को नै कि आपण माने रिलेट करे पारिबे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी उप्स आंसर देखि देला ठीक अछि एनीवे को मते को ए बालेश्वर भद्रक पार्ट ऑफ जाजपुर एग्रीकल्चरल को डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट्स टू व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन हां मामा नै म क्लास करू सन्ना कॉल करथला मु कॉन्फिडेंस कर A Baleswar Bhadrak part of Jashpur agricultural districts contribute to which agroclimatic zone को climatic zone को हमें आपको relate करी परिबा quick ये कही परिबो देखो agroclimatic जोन जते बेले आपण मान को क्वेश्चंस पचारुची ताले ओडिसा सब बेले मन रखिबो डिवाइडेड इनटू केते टाइप्स रो रहिबो ना 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन रे ओडिसा रा क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड करा जायछि कोन ना बेस्ड ऑन द सॉइल बेस्ड ऑन द रेनफॉल एंड द टोपोग्राफी तो याकू आपण मानकर कोन ना बेस करी कि टोटल 10 डिवीजन रे डिवाइड करा जायछि जेमिति कि आपण मान जानछन नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन गोटे जे कि कवर अप करूछि आपनकर बालेश्वर भद्रक और लाइक पार्ट्स ऑफ जाजपुर ये आपनकर कोथरे जीवो नॉर्दर्न ईस्टर्न रे जीवो तो ऑब्वियसली आपण माने आंसर दोसंती ऑप्शन बी हबो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेट्यू कहिले कोडा हबो मते देखा कहिलो जते बेले नॉर्दर्न वेस्टर्न आछी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ नॉर्दर्न वेस्टर्न कहिले आपण माने कहि परिबे कि द पार्ट्स ऑफ सुंदरगढ़ देवगढ़ ताको आपण माने रिलेट करै परिबे कहा सहित ना नॉर्थ वेस्टर्न सहित कोन ना सुंदरगढ़ देन देवगढ़ एमान को रिलेट करे परिबो व्हेयरएस नॉर्दर्न ईस्टर्न को तो राइट आंसर आपनकर हबो ओके नॉर्थ ईस्टर्न घाट एमिति किसी घाट आपण माने जानि संती नाही बट स्टिल आमे कहि परिबा नॉर्थ ईस्ट जते बेले कहूची कोस्टल प्लेन कथा जते बेले कहइबो सेते बेले आपनकर बालेश्वर हैला भद्रक हैला जाजपुर हैला एडा को कोस्टल आमे कहि परिबा बट जते बेले पूरा इंटीरियर कथा कहिला फॉर एग्जांपल आमे कहि परिबा टोटल फुलबाणी को कवर अप करूची रायगढ़ को कवर अप करूची सम पार्ट्स ऑफ द गंजाम डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करूची ताको आमे टोटल नॉर्थ ईस्टर्न घाट को नै परिबा मोस्टली कहा को ना हिली टेरेन विथ कोन माने ब्राउन फॉरेस्ट हिल जेटा कि ब्राउन फॉरेस्ट आपनकर कंटेन हुए ताको हमें कहि परिबा नॉर्थ ईस्टर्न साइड
बाकी ईस्टर्न घाट आपण माने जानि संती टोटल कवर अप करूची कोन ना कोरापुट नवरंगपुर ये आपनकर ईस्टर्न घाट कवर अप करूची कोरापुट टू नवरंगपुर. Am I clear? Next question. So right answer option B. The district of Baleswar, Bhadrak and parts of Jajpur fall under the northeastern coastal plain. Okay. Next also, what type of climate classification is proposed by Thantwait for Odisha? मानकु दीटा classification कहिथिली climatic classification. आज्ञा सर आज्ञा केमदी माने को गाड़ीटा यार guys just 2 minutes सर को गाड़ी चोरी हला हेलो हाँ सर को गाड़ी चोरी हला आपण टिके ऊपर को गले ओनर को सेठी जणे थिबे पंडा को मते कथा करै दियंतु जानतु सेठी जणे पंडा बाबू थिबे तांको फोन दियंतु मु कथा जाउ सीसीटीवी चेक करत नॉक करंतु डोर नॉक करंतु सेठी डोर नॉक करंतु जणे पंडा बाबू थिबे सेठी रुहंदी से तांको मो सहित कथा करै दियंतु मु कथा कहि के तांको कहि दोछ डायरेक्टर नाही लेफ्ट साइड को ऊपर को जाई के लेफ्ट साइड नॉक करंतु दियंतु दियंतु तांको फोन दियंतु मु कथा दोछ हेलो अरे मु सुदीप्ता मैडम कहउतली जो हमर एक्चुअली सारंकर गाड़ीटा बाहर थिला स्काई कलर स्कूटीटा तार चोरी हो जाइए टिके सीसीटीवी चेक करदेवे कि सार को देखदेवे अच्छा 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 ठीक है मुझे कहबी कि शतपथी सार विषय एबे जस्ट है ना इवनिंग रे ठीक अच्छे अच्छा हो ठीक अच्छे ठीक अच्छे सर सर मो कथा टिके शुणु
ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସେ ପୋଲିସ ସେଇଠି ଥିଲେ ତ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ମୁଁ କ୍ଲାସଟା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆପଣ ଖାଲି ଯାଇକି ଏଫଆଇଆରଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पता लग गया चलो क्लास करो कुह मते what type of climate classification is proposed by the thorned weight for Odisha तो ओडिशा रिलेटेड थर्न को विषय जो आम कहूचे गोटे जिनस आपंकर आसूची एडब्ल्यू कहले आपण मैंने जानी कोपेन्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग जो थर्न कथा कहूची ताहले आपण मैंने जानी सी डब्ल्यू थर्न ना क्लासिफिकेशन क्या हुए काली ही तुमको डिटेल रे बुझेइथिली वाटर बैलेंस को लेकिन दैट मीन्स आपणकर पोटेंशियल कौन evapotranspiration that is the PET बोली हमें ताको होचे कौन पोटेंशियल evapotranspiration सेही मेथड नै कि मींस वाटर बैलेंस आपनकर केति कि लेफ्ट रही जाउची आफ्टर एवापोरेशन ताकू नै कि से क्लाइमेट को क्लासिफाई करछन अरे हां केडी सांग गाड़ी चोरी हे जाइची ऑफिस सामने सर क्लास सॉरी कि बाहर को बोधे खाइबा पे बाहर थिले और व्हाट चोरी हे जाइची कोन करबा किछि भुवनेश्वर को जगह सेफ न तो राइट आंसर आपनकर एठी कोन होची ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मानसून सब ह्यूमिड विथ डेफिशिएंट वाटर आपनकर ऑप्शन कोन होची द राइट आंसर विल बी योर सी according to the Thornthwaite's climate classification Odisha falls under the subhumid category characterized by adequate monsoonal rainfall but deficient water rains rather than rainforest desert or few tropical monsoon types okay हाँ हाँ जिबे सर माने जिबे एबे आछुचंदी पिंकू सर जोगेश सर जिबे समस्त Now, which of the following climate regions is least common in Odisha? Least common in Odisha. कौन कहि परिबा? Which one is? Which of the following climate regions is least common in Odisha? Tropical savanna type. Tropical savanna type is not at all least. माने least आपनकर ई त केबे हबनी. आपण मान जानछन त क्लाइमेट ही हमें कहूचे दैट इज व्हाट ना आपनकर ट्रॉपिकल साबना बट आपनकर जो एराइड रहूची दैट मींस कोन ना बीडब्ल्यूएच आको हमें रिलेट करि परिबा कि कारण ई आपनकर एरिड कथा जते बेले कहूची ई आपनकर डेजर्ट रे देखिबा को पाइबे सो राइट आंसर कोन ना एलिमिनेशन प्रोसेस को पळा ट्रॉपिकल साबना कहूची दैट इज द मोस्ट कॉमन इन ओडिशा सब ह्यूमिड कहले हमें कहि परबा दिस इज वेरी जनरल दैट मींस मॉइस्चर रिजाइन करूची एते बेले टोटल स्टेट रे हमें ताकू कहूची द क्लाइमेटिक कंडीशन इज द सब ह्यूमिड वन ओके चलो नेक्स्ट मते को अकॉर्डिंग टू एसबी सैटर्जी बढ़िया क्वेश्चन एटा एग्जाम रे सब बेले एटा पचारे मते कुह अकॉर्डिंग टू एसपी सैटर्जी ओके क्लासिफिकेशन मते को एसपी सैटर्जी अकॉर्डिंग कौन हबो राइट आंसर टिके मते को जस्ट 2 मिनिट दियो टिके गोटे मिनिट आज्ञा सर
आगे आगे माने इन्वेस्टिगेशन चलेगा। हम्म। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे सर मु कहि दोचे बस स्कूटी थिला। सर मु जानी ना एक्चुअली लॉक लॉक तो हैंडल करंती बट से सर सालिया साई पाखो ना माने तो चोर बस्तीटा सर ये आपंकर किए कलिग थे चिन्ह जदि कहीदेवे से सार जी खाली एफआईआर टा रखिदेवा माने जहाँ भी प्रोसीडियर आपन को पठेदेवी तो व्हाट्सएप करदेवी तो ठीक है सर कर दो। आज्ञा आज्ञा पठाऊ से सब आप पठे दो। आंसर देला मते एटा क्लास तो किसी करी भी पारुनी मु तम मानकर लॉग बारी पड़ जाइथिरे पद्मास तळ चोरर राग तम मान ऊपर सुझाई देबी ना कोन। हेलो सर अपन जाउचंदी की सर केडी सांग फोन एक्चुअली आसुची बार बार बिजी आसुची सर को टिके कहतु मते कॉल करिवे से कौन कहले ताको गाड़ी नंबर टा मते टिके पठांतु मु से पीसीआर वाला जो नयपल्ली पीसीआर वैन को ताको नंबर दे देबी। हां हे कोठी थिला सर कोठी थिला गाड़ी हां 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 केमती जानले तो रखंतु सर मु क्लास स्टार्ट का नै जे तापर मु केडी सांग कथा बुझुची तो काम उडा करू पुलिस को जस्ट इमेजिन पुलिस को मु कॉल करी सारलिनी तापर कहजी गाड़ी मिल गल मु धन्य कि दिन आज यार ओहो मा तारिणी तो अकॉर्डिंग टू द एसपी चैटर्जी आपण माने कहंतु मते कहंतु एसपी चैटर्जी अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द राइट आंसर क्लासिफिकेशन करंतु लॉल यार मा तारिणी कौन करछ तमे सो राइट आंसर देखो कौन कहउचंदी ना सी अछि ऑप्शन रे राइट आंसर होची ट्रॉपिकल मानसून गोटे रहउची आपनकर ट्रॉपिकल सावना गोटे ट्रॉपिकल मानसून तो दीटा जाक आपण माने कंफ्यूज हेबे नाही पुलिस को कॉल करके वेके बोली कौन कहबी आउ से मते व्हाट्सएप भी बोधे करि सारि थिबे पठांतु बोली ना ना आसेनी चलंतु देखिबा मत उल्टा मते सुनिबो माने सोदा मु सुनिबी एते रिस्पांसिबल सिटीजन केमिति ठाउटी बंची जीवा आस तो ट्रॉपिकल साबना कहले आपण मान जानि संती अकॉर्डिंग टू द लाइक आपनकर कोन चैटर्जी आमे जानछि कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल साबना जेते बेले आपनकर टोटल रीजन कहूछि आमे कोन जानु छे ना ट्रॉपिकल मॉनसून एति के जिंसा रिलेट करे पारिबो यस और नो अमित नाही की क्लास रे अछि किए से बलराम इरिटेट करू जोडे क्लास मसरे आसी out from my class
चलो ओके तो नेक्स्ट which climate type in Odisha is characterized by a deficiency in winter rain कौन होगा कर्म करने जाता हूं तो कांड हो जाता है अरे मिल्लू वो तो मेरे साथ होता है कुछ करने जाती हूँ तो कांड ही हो जाता है always all the time so which climate type in Odisha is characterized by a deficiency in winter rains tropical rainforest tropical monsoon tropical savanna subhumid कौन हबो राइट आंसर को क्लाइमेट देख जिते बेले भी आपन को क्वेश्चन आसुची क्लाइमेट ऊपर क्लाइमेट विथ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर रेनफॉल एटा को आपनकर कहा को रिलेट करिवे आपन माने कहा को रिलेट करिवे ना थॉन्टवेंट का सहित रिलेट करिवे जानिछले एटा तो ऑब्वियसली सी जेते बेले आपनकर करिसंती कोन करिवे ना सब ह्यूमिड ही करिवे ऑप्शन डी देखा जाउची ऑप्शन डी एठी देखा जाउची साबन्ना आसी गला आपनकर ट्रॉपिकल साबन्ना आपनकर एडब्ल्यू आसुथिला एडब्ल्यू कहले कोपेंस कहूची एठी आपण माने को कोन कहूची ना व्हिच क्लाइमेट टाइप इन ओडिसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी इन विंटर रेन रेन मींस आपनकर कोन ना आपनकर रेन रो केति के मॉइस्चर कंटेंट रहूची माने कोन हमें कहि परिबा वाटर फॉल ऊपर रेनफॉल ऊपर डिपेंडेंट कहूची सेटा आपनकर थंतुएट करथिले माने एति के रिलेट करी करी क्वेश्चन पछारिबो थंतुएट कहिले माने स्वागतिका मैम आपण टिके रागी चिड़ी होचंदी आज दिनटा एते खराब मो मामा क्लास देखुथो बोली मु कहि भी पारुनी कारण भयंकर सुदा पड़िबो छाड़ा आसो तो सब ह्यूमिड next the climate type in Odisha characterized by deficiency winter rains according to Thornthwaite's classification is subhumid indicating a tropical climate with mild winters and a distinct lack of significant water precipitation etc. After that, next, the state of Odisha has been divided into how many? The state of Odisha has been divided into how many agroclimatic zones? जेते agroclimatic zone कथा कहूची, that means अरे के बुझ एकरे तो मो देह भल नाही सकाळु म आज बैक टू बैक तीनटा क्लास नै जी पेड क्लास आप यूट्यूब क्लास तापरे रेस्टिंग पीरियड मते मिलिनी देन जेते बेले रेस्ट करूथली सडन उठिली इयरिंग्स गोटे गायब हो जाए मो कानर लाइक रूम भितर पड़ी बट मो रूम भितर पाऊनी पुणी संक्रांति रे सुना हजिबा केते खराब हबो दैट वाज द डायमंड वन आ मते केते केते हॉट होतो ता भितर भी मैं क्लास नउची पांचटा वाला क्लास एते मिस करथिली क्लास माने सेई टाइम रे कैंसिल करथिली एंड ए पर्यंत मु पाऊनी ना इयरिंग पाउची ना ता पछ ताली पाउची आ एटारे त माने मते कहउछ मूड हैप्पी जॉली मूड रे क्लास करिवा पई स्टिल क्लास करूची त मानकर एग्जाम पाखे आसलानी बोली so the state of Odisha has been divided into how many agroclimatic zone mama class aje dekhu notko hope for the best हुआ तो नेक्स्ट कौन कहबा 8 10 7 और 12 कौन कहूचे को क्लाइमेटिक जोन सहित हम रिलेट करूचे 8 10 7 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हेले सब बेले 10 सहित मन रखिबो 10 टा पचारिबो जते बेले कौन कौन कहबो ना फर्स्ट वन आपनकर आसुची नॉर्दर्न ईस्टर्न फर्स्ट वन नॉर्दर्न ईस्टर्न देन आपनकर कोन सॉरी नॉर्दर्न वेस्टर्न सेपटु नेबा ना एमिति बुलेइबा क्लॉकवाइज नॉर्दर्न वेस्टर्न देन सेकंड आपनकर की आसीबो ना नॉर्दर्न सेंट्रल देन थर्ड वन आपनकर की आसीबो ना नॉर्दर्न ईस्टर्न कोन ना नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैला देन नंबर 4 रे की आसीबो ना नॉर्दर्न सॉरी नॉर्थ पळेला ना साउथ माने ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आगे आसीबो ईस्ट देन आसीबो साउथ ईस्ट हां ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्टल प्लेन आपनकर कोस्टल ओके तापरे नंबर 5 आपनकर आसीबो नॉर्थ ईस्टर्न घाट तो एमिति पांचटा देन आउ पांचटा आपण माने ठीक मने पके लिखिबे जेमिति आपण माने कहि परिबे ईस्टर्न घाट हाईलैंड भी पड़े आसीबो देन साउथ ईस्टर्न घाट भी आपनकर आसीबो वेस्टर्न अंडुलेटिंग जोन आसीबो वेस्टर्न कोस्टल जोन आसीबो माने कोस्टल टेबल लैंड जोटा को हमें कहूचे मिड सेंट्रल टेबल लैंड एमिति हेगे आपनकर टोटल 10 टा बोली मने रखिथिबे हैला आसो सो टोटल आपनकर 10 टाइप्स रो रहुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन ओडिशा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस कोकोनट एंड काजू
कौन कहा सहित रिलेट करें परिबे मते कुह क्विक Which agroclimatic zone in Odisha is characterized by a hot and humid climate and is suitable for crops? अरे मु ठीक अछि डोंट वरी क्लास ठीक अछि को गोटे गीत गाइबा मन भल लागिबो गोटे गीत त माने कहलो गोटे गीत गाइबा भल लागिबो मन टिके को क्रिस का गाना सुनेगा से गीत ओनली जोगेश सर को जणा मते नहीं मेरा दिल भी कितना पागल है सेटा केडी संग गाना हौ मो गीत सुनी दियो मते डी रिलैक्स लागो तो मो गीत सुनले पूरा ब्लड फ्लड बाहरी जो कानर दैट आई नो स्टिल मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिन लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा सी मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया ना तू जो मेरे नाल दुरे था तुर पे मेरी आसा जीना मेरा हुई कौन है तेरा कि मैं करूँ इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी चलो डोंट वरी एटा मो पई गाइली तुम मानक पई नाही तापर एटू काटी दबा also which agroclimatic zone in Odisha is characterized by a hot and humid climate and is suitable for crops like rice coconut and cashew जते बेले भी आपण मानकू कोकोनट कथा कहूची जते बेले काजू कथा कहूची that related with the coastal plain that means एठी कोठी ऑप्शन आपण मानकू कोस्टल सहित रिलेटेड करिछि मते को बिकॉज़ आपण मान जानछथि काजू सहित हम गंजाम को रिलेट करूछे हन नै मते को सो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एठी कोस्टल प्लेन अछि को Okay, the east and southeastern coastal plain will be the right one. Next question mate kuha in which agroclimatic zone of Odisha is millet one of the main crop grown? The millet apanakara ko jaga re hochi? Quick. Kuha. Right answer कौन कहूचे 9 number 9 south कौन कहि परिबा ना साउथ ईस्टर्न घाट ताको हम रिलेट करि परिबा पाखा पाखी आपनकर जानि चंदी मालकानगिरी हेला कोरापुट हेला ए रीजन तो मालकानगिरी कोरापुट आपनकर कोठी अछि ना साउथ ईस्टर्न घाट रे आपनकर लोकेटेड अछि हन नै मते को
रागी मांडिया ए सब आपनकर कोन ना मिलेट मिशन अंडर रे आसुची दैट हैज एक्सपेंडेड द मिलेट कोन कल्टीवेशन अक्रॉस द स्टेट इवन टोटल इंडिया सारा भी आपनकर गोटे बढ़िया मार्केटिंग चली आपनकर मिलेट वाला कुकीज मिलुची मिलेट रो डोसा मिलेट रो इडली एवरीथिंग हैज बीन चेंज टू कोन राइस टू मिलेट हां ना नहीं थमे उडा केबे सुधरियोनी बुझिला चलो the millets that is such as ragi and small millets are predominantly grown in the southeastern Ghat agroclimatic zone of Odisha which includes the hilly and tribal dominated districts. This crop is well suited the undulating terrain, poor soils and rain-fed conditions of these regions. Okay. Next, mate ko the northeastern Ghat zone in Odisha is characterized by which type of climate? ये सौम्य बाबू मांडिया इंग्लिश मिलेट ओके आस रागी मिलेट तो कौन कहूँ हॉट एंड ह्यूमिड वार्म एंड ह्यूमिड हॉट एंड मॉइस्ट सब ह्यूमिड और सब ह्यूमिड जिते नॉर्थ ईस्टर्न कथा क्वेश्चन रे आसीबो तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कोन ना सब ह्यूमिड या फिर नॉर्थ कोन ताको हमें रिलेट कहां सहित करै परिबा कहां सहित ना नॉर्थ ईस्टर्न घाट जोन तार क्लाइमेट सहित हमें रिलेट करै परिबा दैट मींस आपनकर कोथि रे जीवो ना हॉट एंड मॉइस्ट सब ह्यूमिड रे पळेबो की ऑप्शन सी रे पळेबो की वेरी गुड सो हॉट एंड मॉइस्ट सब ह्यूमिड रे ये जीवो क्लियर बिकॉज़ वी नो द ईस्टर्न घाट जोन टोटल कवर अप करूची आपनकर डिस्ट्रिक्ट लाइक आपनकर कंधमाल रहूची रायगडा रहूची पार्ट्स ऑफ गंजाम रहूची सो ए सब आपनकर बिलोंग करूची सेठी बहुत सारा कॉमेडी क्लास तमन को अवेलेबल होबो डोंट वरी ओके दिस क्लास इज टोटल स्टडी रिलेटेड नॉट ए कॉमेडी रिलेटेड एमती नाही तो तमन को कॉमेडी सुनिबार अछि तो मुठे तमन को कॉमेडी करिवि हो ना एमती होबनी ना तापे कपिल शर्मा शो भी अछि हो ना चलो नेक्स्ट अगेन कहूची महापैक रा प्राइस आपनकर 3999 ही जाइसी 999 आपण माने कांस्टेबल बैच एक्सेट्रा सब बैच माने नै परिबे बट स्टिल जदी महापैक नउचंती सब एग्जामिनेशन आपनकर ता अंडर कवर अप हिजिबा 2 ईयर वैलिडिटी सहित नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी ओडिसा सिविल सर्विस टीचिंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी म तमन को शो ऑफ करिछि आपण माने जाई कि चेक करि परिबे मते को व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन ओडिसा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड इज सुइटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक व्हाट लाइक राइस सुगरकेन एंड जूट जेतेबेला राइस कहूची सुगरकेन कहूची जूट कहूची ताको हमें रिलेट करै परिबा कहा सहित क्विक कहा सहित रिलेट करै परिबा नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहिले नॉर्थ ईस्टर्न कहला माने बालेश्वर अमित घर पाखरे है ना बालेश्वर हेला भद्रक हेला एंड द पार्ट्स ऑफ सम जाजपुर भी हमें कहि परिबा दैट मींस ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑब्वियसली हो नेक्स्ट मते को in which zone of Odisha you would find a combination of rice maize and oil seeds as the main crops तो as a main crops हमें relate करे परिबा कहा सहित मते को as a main crop हमें कहा सहित relate करे परिबा quick number 12 obviously eastern ghat highland आपनकर हबो काहे कि नॉर्थ कोस्टल कोथि पई हबो राइट आंसर कोन देखि अच्छा सॉरी तुम माने थाले राइट अछ ना कि आसा ठीक है नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू क्वेश्चन आउथ देखि देबा अच्छा राइस मेज एंड ऑयल सीड कहि छी यस सॉरी मुता को ईस्टर्न घाट हाईलैंड भाबी देथिली नो 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 नॉट सी ऑप्शन ए विल बी बिकॉज़ ईस्टर्न घाट हाईलैंड आपण मानकर टोटल मिक्स क्रॉप आसी जाय हैला कवरिंग करि के आपनकर कोरापुट नवरंगपुर एक्सेट्रा निराय बट नॉर्थ आपनकर सेंट्रल प्लेट्यू कहले सी आपनकर ओनली राइस टोटल डोमिनेटिंग हमर राइस रहउछि ना ओडिसा रे ओके द स्टेपल फूड आसो नेक्स्ट मते को consider the following statements about the agroclimatic zone agroclimatic zone ओडिसा रो ताकू कोन ना रिलेट करो को मते कोटा हबो राइट आंसर द agroclimatic zone बाघ टिके क्लास मसिरे जाई कि अलगा आडे टिके बुली बाली कि आसीबो क्लास देखिबो कोठी कोन चाली छि सेठी जाई कि से मैडम मानकु सर मानकु टिके मेसेज करिवो बाघ को तमे ओडिसा रे जत्ते प्लेटफॉर्म अछि सब प्लेटफॉर्म रे देखि परिबो ही हैज दैट टैलेंट बुझिलो आसा
तो कौन कहबा ना राइट आंसर आपनकर कोन होची स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ए सब को हम रिलेट करिबा फर्स्ट कहछि द वेस्टर्न अंडुलेटिंग जोन ऑफ ओडिशा इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द स्टेट तो पल्सेस आपनकर वेस्टर्न अंडुलेटिंग जोन रे हुए कि दिस इज कोठी ना कलाहांडी नुआपड़ा रे हुए इज इंडीड ए कोन सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द पल्सेस लाइक आपण माने कहि परिबे हरड सेठी हुए भलो आपनकर जटा को कोन पिजन पी कहूचे सेटा भी हुए भलो मुग भी भलो चाष हुए बिकॉज़ दीज आर द क्रॉप्स हमें जानिचे माने ड्रॉट एंड हार्डी कंडीशंस रे भी हेई पारिबो सो वेस्टर्न रीजन को हमें ऑटोमेटिकली रिलेट करे परिबा सो ऑब्वियसली आपनकर ऑप्शन 1 राइट हे जिवो हैला देन ऑप्शन 2 कोन कहछि ना रेनफॉल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ ओडिशा इज दैट ट्रू कुआ मते रेनफॉल इज प्राइमरी क्राइटेरियन यूज्ड बाय द कोन ना जेते सब डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर अछि एंड द फूड प्रोडक्शन आपण मान जानिसन जा हमें कोन कहूचे ना डायरेक्टोरेट एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन डीएफपी बोली कहूचे ताको क्लासिफाई करिबा को ओडिसा रे 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन तो ऑब्वियसली याकू भी हमें राइट आंसर मारी परिबा की सो बोथ 1 एंड 2 को राइट आंसर चूज करि परिबा द टू स्टेटमेंट्स आर राइट मते ओनली आई थिंक लागु छी ना ओनली नहीं बोथ हबो नेक्स्ट मते को कंसीडर द फॉलोइंग सॉइल्स फर्स्ट कहिछि सलाइन देन कहिछि रेड एंड मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक देन लैटेराइट देन आपनकर कहिछि एलुवियल तो कोटा हबो राइट आंसर मते कुओ व्हिच ऑफ द सॉइल गिवन अबव इज आर फाउंड इन केंद्रापड़ा एंड खोर्धा डिस्ट्रिक्ट को मते केंद्रापड़ा एंड खोर्धा डिस्ट्रिक्ट्स रे आपनकर कोटा प्रेजेंट अछि द सॉइल्स इन केंद्रापड़ा एंड खोर्धा डिस्ट्रिक्ट्स these two districts represent आपनकर को जगह रे आसीबो obviously आपनकर saline soil देखा जिवो alluvial soil देखा जिवो laterite soil देखा जिवो ता माने कोन हमें कहि परिबा कि all of these बोली जेते बेले saline आसुची alluvial आसुची laterite आसुची red and mixed red black आसीबोनी रेड एंड मिक्स रेड ब्लैक एठी आपनकर आसीबो नाही कारण रेड एंड मिक्स ब्लैक्स आपनकर कोठी ना भुवनेश्वर कटक तार एजेस माने करे देखा जाय जोटा कि गोटे रेडिश कलर सॉइल को प्रोवाइड करे जोटा कि रिच इन द आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड आपनकर थाए सो याकू हम एलिमिनेट जदी करि दोचे 1 3 एंड 4 ऑप्शन अछि कि वेरी गुड ऑप्शन बी ऑल मानसी ऑल आसुथिला ऑप्शन ना हाउ आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुहा among the following options which of these measures can be taken to reduce the damage caused by cyclones in Odisha ko right answer कौन है को जल्दी ओके सो ऑल ऑफ द अबव अछि आपण मानकु देखा भी गला ना कि गवर्नमेंट ऑप्शन तो साइक्लोन आपनकर कोन कोन डैमेज करि पारे ना साइक्लोन डैमेज दैट द रिडक्शन ऑफ लाइक मेजर्स हमें कहि परिबा ओडिशा इज अ ग्लोबल लीडर इन साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट so all the option हमें कहि परिबा लिस्टेड आर कोन आपनकर क्रिटिकली components of the zero casualty mission so evacuating people from the coastal areas that's true building cyclone shelters that's also true so planting trees along the coast that's also true so all of the above next mate kuho kon kahichi which of the following month is most likely to experience cyclones in Odisha quick mate ko which of the following month is most likely to experience cyclones in Odisha May June July or October कोटा आपनकर फेवरेट मंथ हमें कहि परिबा मोस्ट साइक्लोन prone month आपनकर जुलाई आसी जाउछि ना कि पूरा जुलाई लिखा है जी ओडिसा रे आपनकर साइक्लोन सीजन हमें कहि परिबा प्री मानसून दैट मींस अप्रैल में हमें नहीं परिबा आइदर पोस्ट मानसून दैट मींस हमें अक्टोबर नवेम्बर नहीं परिबा मे एंड अक्टोबर छडा को मंथ रे आपनकर केबे आसीछि मते कहिलो सो अक्टोबर को हमें कहि परिबा दिस इज अ हिस्टोरिकल माने हमें कहि परिबा दिस इज द मोस्ट डेंजरियस कोन मंथ फॉर द स्टेट ओडिसा पाई आपनकर सबुटु भयानक मंथ होची निजे अक्टोबर सो अक्टोबर आसिला आपण मान कोने पैनिक कंडीशन पळे आसुथो हो नाही सो राइट आंसर आसीबो ऑब्वियसली अक्टोबर कोथि पई त मानकर आसी जाउची मे अप्रैल मन इच्छा घर कथा ना आसा so where are the majority of the cyclones affecting the state of Odisha primarily generated quick को माने सब RI बैच CGL बैच पेड क्लास नहीं जो पेड क्लास स्टार्ट ही सारी लानी मोर आपण मानकर 11 to 12:30 क्लास रहउची
ओके तुम माने सब क्लास रे कोड जाउछ बहुत ही नॉमिनल पिला प्रेजेंट रहउचंती बैच तो आपनकर 200 300 पिला आपनकर बैच परचेज हेची बट बहुत कम कम पिला रहउचंती क्लास रे सब कोन जॉब होल्डर रिकॉर्डिंग खाली देखुचंती गायत्री कोन आउ कहिबी को So, where are the majority of the cyclones affecting the state of Odisha primarily generate obviously apanakara Bay of Bengal haba. Unlike the Arabian Sea, ame kahuche the Bay of Bengal is a semi-enclosed basin with Odisha that has a warm surface temperature often apanakara 28 degrees Celsius ru bhi adhika hei jaye. So ame taku relate karei pariba hela. So the majority of the cyclones affecting the state of Odisha are primarily generated in the Bay of Bengal. The state's long coastline along the Bay of Bengal makes it highly vulnerable to severe weather events that form in this warm body of water. आपण माने को नोटिफिकेशन आसुनी मैम आपनकर मोस्ट प्रोनाउंसिएशंस रे लेटर्स को Z अच्छा S को Z एंड P को V को F आसुची कोन P को V प्रोनाउंसिएशन त मानकर सेमति आसुची अच्छा आसा त मते को व्हाट सर्व्स एज अच्छा एठी एस टा भी त मानकु जी भला सुबिला की इग्नोर व्हाट सर्व्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ tropical cyclones that affect the coastal areas of Odisha. The right answer एठी कोन हबो क्वेश्चन नंबर 18 क्विकली कुह टाइम पळेलानी पर्यंत टाइम क्लास सरी को मते कोन हबो now we know the warm surface and the temperature आपनकर लीड करूची हना नै मते देखो तो often above 28 degree celsius को पळौची जेतेबेले फ्रेश वाटर इनफ्लक्स होउची दैट मींस द लार्ज आपनकर जेते रिवर्स माने रहउचंती लाइक हमें कहि परिबा नॉट ओडिशा इंडिया रे भी कहि परिबा गंगा हैला ब्रह्मपुत्र हैला महानदी हैला ओडिसा रो सो ये आपनकर पोर करिके आनंदी फ्रेश वाटर को कोठी कि ना टू द बे ऑफ बेंगल एंड दिस क्रिएट अ लो सैलिनिटी सरफेस लेयर जोटा कि प्रिवेंट करे मिक्सिंग ऑफ द कोल्ड डीप वाटर विथ द वार्म सरफेस अदरवाइज आपनकर बार बार साइक्लोन आसंता बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स आपनकर किछि का केस रे बैलेंस हो जाए एंड इट मेड द रेनफॉल आपनकर आसी जाए ओनली अक्टोबर 29 माने से भीतर अक्टोबर भीतर आपनकर आसी जाए हैला चलो आपनकर जो महाबात्या आस्तिला सुपर साइक्लोन थिला अक्टोबर 29 रे थिला ना 1999 महाबात्या अक्टोबर 29 थिला ना हां अक्टोबर 29 रे थिला आपनकर विंड स्पीड केते थिला ना 260 रु 300 किलोमीटर थिला सबु दिन मोर क्लास आपण मानकर 11 टू 12:30 क्लास रहुची आपरे सो बी प्रेजेंट एट दैट टाइम जदी नोटिफिकेशन जाउनी भी ताले मु तो कहि देरी ना से टाइम रे क्लास आसी गिरु हैला रिकॉर्डिंग तो एटलीस्ट अछि जाई कि देखो को लेवल रे क्लास होची तो राइट आंसर कोन हो इंडियन ओशन अरेबियन ओशन वेस्टर्न घाट तो ऑब्वियसली आपण कर कोन ना सॉरी बे ऑफ बंगाल अछि मु इंडियन ओशन मारुची आसा तो बे ऑफ बंगाल डी नेक्स्ट मते कहिबा which cyclone is known as the Odisha cyclone and caused massive destructions along with widespread floods in the state जन्म तो हे जाइथिली केते ईयर रहिथिली मने नै गोटे वर्ष रहिथिली केते भूले भंगी सब पचारिछ ना 98 रे जन्म हेची आउ किछि पचारिबो ना थरकरे मने रहइबो गद्ध दळ आसा साइक्लोन तितली साइक्लोन हुडहुड साइक्लोन फाइलिन 1999 सुपर साइक्लोन स्टॉर्म तो काहा को हमें रिलेट करे परिबा मते कुआ क्वेश्चन नंबर 19 अक्टोबर 29 1999 सो 1999 सुपर साइक्लोन को हमें रिलेट करेबा ओके नेक्स्ट चलो मते को ड्यूरिंग व्हिच साइक्लोन डिड 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा आंध्र प्रदेश एंड अंडमान एक्सपीरियंस द इंपैक्ट ऑफ ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म तो को साइक्लोनिक स्टॉर्म ने आपन कर हेतिला वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हुआ very severe cyclonic storms एतेबेले कहूची ताकू आपण माने रिलेट करेबे कहा सहित the cyclones are classified by the wind speed and the very severe cyclone that means the wind speed
between the 118 to 221 रहिबा कथा and आपनकर ताठु अधिक तो 118 to 221 किलोमीटर आपनकर रहउछथि काहा को हम रिलेट करबे आंध्र कथा कहिछि 2014 हुडहुड को रिलेट करै परिबो ना कि वेरी गुड 2014 हुडहुड मु भी तम मानक विषय भाबुथिली तरे अरे तितली हबो कि बट मु कहे सुनिबी गध मानक कथा थोड़ी ना सुना जाए ना कि एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन हुडहुड थिला 2014 रे आसीथिला लैंडफॉल हेतिला विशाखापट्टनम रे 2014 रे आपनकर आसीथिला आज्ञा माने हैला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ व्हिच साइक्लोन अफेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोपालपुर इन गंजाम हेवीली एंड वाज कैटेगराइज्ड एज अ वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये आपनकर अफेक्ट करथिला कहा को ना गोपालपुर को आपनकर अफेक्ट करथिला दैट मींस ये कोठी ना गंजाम रे आसिकी लैंडफॉल करिथिबो ताहाले आपण माने रिलेट करै परिबे कहा को एठी कुह कहा को ना फाइलिन को गोपालपुर जे कथा जेते बेले कहूची कहा को रिलेट करैबा ना फाइलिन को रिलेट करैबा ऑब्वियसली कहा को फाइलिन केबे आसीथिला 2013 तो 2013 रे फाइलिन आसीथिला तो ता परे आपनकर हुडहुड आसीथिला अन नहीं अक्टोबर रे आसीथिला 2013 रे फाइलिन आपनकर दैट मेड द हिस्टोरिकल लैंडफॉल इन द कोन ना गोपालपुर थारे हेतिला वेरी सिवियर साइक्लोनिक हेतिला विंड स्पीड आपनकर थिला केते ना 220 किलोमीटर पर आवर आपनकर ई स्पीड रे पवन रे गति थिला हैला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहिबो which of the following factors is most responsible for the heterogeneity of soils in Odisha climate relief vegetation parent rock material कौन हबो राइट आंसर कुह तो राइट आंसर क्विक कौन हबो देखो सॉइल हेटेरोजेनिटी कहूची दैट मींस द सॉइल डाइवर्सिटी कथा पचारि ओके तो जते बेले सॉइल डाइवर्सिटी कथा पचारुची तो प्राइमरी रीजन आपनकर कोन होबा दरकार ओडिशा हैज such a कोन ना वैरायटी ऑफ सॉइल आपनकर प्रेजेंट रहउची रेड सॉइल प्रेजेंट रहउची ब्लैक सॉइल रहउची इवन लैटेराइट सॉइल रहउची अलुवियल सॉइल रहउची सो पेरेंट रॉक मटेरियल हमें कहि परिबा सो रिलेट करिबा कहा सहित को क्लाइमेट रिलीफ वेजिटेशन या फिर कहा सहित हमें करिबा सो राइट आंसर कोन कहउछो सब ऑप्शन डी को कहउछो वेरी गुड सो ऑप्शन डी रे आपनकर कोन छै ना पेरेंट रॉक मटेरियल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आसो मते को व्हिच रीजन्स ऑफ ओडिशा हैज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल व्हिच रीजन्स ऑफ ओडिशा हैज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल क्विक फर्टाइल सॉइल कथा कहूची मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपनकर को रीजन रे प्रेजेंट रुहे कोस्टल बेल्ट रो माने कोस्टल बेल्ट रो ऑब्वियसली आपनकर रहिबो उत्कल प्लेन हमें कहूचे जा को फर्टाइल रीजन ऑफ ओडिशा why because it is composed of the alluvial soil जते बेले आपनकर alluvial soil deposit हबो सेते बेले हमें कहि परिबा the major rivers like आपनकर महानदी हैला ब्राह्मणी हैला बैतरणी हैला से माने आपनकर alluvial soil deposition करिबारे हेल्प करंती ऊपर लेयर रो आपनकर भासी भासी आसी के तळ मुहान रे लाखंती हो ना नहीं सो रिलेट करिबा कहा सहित ना कोस्टल बेल्ट सहित को रिलेट हमें करै पारिबा आफ्टर दैट आसो which measures can be taken to improve the soil fertility of Odisha crop rotation green manuring application of organic manure or all of the above जल्दी soil fertility आपनकर improve करेबो कहा को ना all the three methods कोन these are essential for sustainable farming in Odisha such as the crop rotation आपण मान जानि संती जदि हमें प्लानिंग करछे टू डिफरेंट क्रॉप्स लाइक आपण माने कहि परिबे लिग्यूम्स भी हमें करूछे कोन राइस जस्ट कल्टीवेशन परे परे हमें लिग्यूम्स पे प्लांट कोड माने प्लान करूछे आफ्टर दैट इट हेल्प्स फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल नेचुरली दैट मींस आपनकर सॉइल फर्टिलिटी कम हुईनी सॉइल फर्टिलिटी जदि हमें रनिंग करूछे क्रॉप कोन ना आपनकर रोटेशन होउची देन आपनकर सॉइल फर्टिलिटी क्षमता बढ़ुची ऑर्गेनिक फार्मिंग करूछे वेरी गुड चंद्रशेखर तो ग्रीन मैन्यूरिंग कहले आपण माने कोन बुझी परिबे ना जते बेले ग्रो करूछे स्पेसिफिक प्लांट आपनकर सपोज धनिया गछ लगाउछे हमें तो डिफरेंट आपनकर ग्रीन प्लांट सहित रिलेट करै परिबा जेमति कि हमें जदी किछि बैकअप प्लान रखुछे कोन ग्रीन प्लांट्स रे कि हमको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करूछि कोन इंक्रीज करूछि ऑर्गेनिक मैटर जोथिरे आपनकर कम सार रे या फिर हमें कहि परिबा बहुत ही लेस जेमिति कि फॉर एग्जांपल कोन कहि परिबा आंबो गछ भी कहि परिबा ओके तो ए सब को हमें रिलेट करै पारिबा आफ्टर दैट चलो राइट आंसर कोन आछि ना ऑल ऑफ द एफ नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुह on the basis of formation the soils of Odisha are classified into which two groups
को दीटा ग्रुप रे क्लासिफाइड हेची ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल, डेल्टाइक एंड ब्राउन सॉइल, रेड एंड लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेसिडुअल। तो जोठी आपनकर रेड सॉइल अछि आपण माने कोन सेठी को जंप करि परिबे कि यस और नो रे मते आंसर दियो। यस यस जदि भूलभाल हे गला, जदि भूलभाल हे गला तो राइट आंसर आसुची ऑप्शन ए। कोन हबो ना ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल, बिकॉज़ एटी पचारिची फॉर्मेशन पाई सॉइल ऑफ ओडिशा क्लासिफाइड हेजी केमिति रे। एटी मेजरली ओडिशा रे को टाइप रो सॉइल पचारथिले, रेड करथांतो, येलो करथांतो या फिर एलुवियल भी करथांतो। बट राइट आंसर ट्रांसपोर्टेड रेसिडुअल कोथि पे हबो? रेसिडुअल माने कोन कहउचो ना द सॉइल स्टे एट द प्लेस ऑफ द बर्थ, हमें ताको कहउचे रेसिडुअल। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट माने सॉरी रेसिडेंट सर्टिफिकेट दैट मींस यू आर फ्रॉम which origin आपनकर शो करूची, दैट मींस रेसिडुअल सॉइल माने कोन जो जगह रे तार ओरिजिन हेची से सॉइल को हम कहउचे रेसिडुअल सॉइल। केमिति फॉर्म होय ना, दे आर फॉर्मड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक, कोन राइट वेयर दे सिट। रिलेट करै परिबा ओडिसा रे कोन आसीबा रेसिडुअल सॉइल? लैटेराइट सॉइल हेला, रेड सॉइल हेला, ब्लैक सॉइल हेला, एउडा होचोंती ताकर रेसिडुअल सॉइल हेला। ट्रांसपोर्टेड हो क्वेश्चन आसीबा ट्रांसपोर्टेड सॉइल माने कोन? these soils are moved from their place of origin by कोन आपनकर डिफरेंट एजेंट्स लाइक हम कहि परियो वाटर हेला, द मेन रीजन रिवर फ्लो रे आपनकर जाई परिबो, सेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल हम कहि परिबा। जोथे आपनकर ओडिसा रा कोन ना अलुवियल एंड डेल्टाइक हम कहि परुचे, जोटा ओडिसा रा में रिलेट करचे कहा सहित अलुवियल हेला, डेल्टाइक हेला, ए सब को रिलेट करि पाछे। दिस सॉइल्स आर द ट्रांसपोर्टेड वन। At the river, they carry the sediments from the highlands to the lowlands and deposit करंते सी कोठी कोस्टल प्लेन ने। सो हमें तांको कोन कहउचे ना ये आपनकर रहउची ट्रांसपोर्टेड, जोटा रेसिडेंट गोटे जगह रे अटकी कि रुहे, लाइक द रेड सॉइल, लाइक द लैटेराइट सॉइल, लाइक द माने ब्लैक सॉइल। तो ए सब को हम रिलेट करि परबा, दिस आर द फिक्स्ड एंड रेसिडुअल सॉइल। एते की क्लियर? चलो नेक्स्ट मते कहबो, इन हाउ मेनी ग्रुप्स आर द सॉइल ऑफ ओडिशा क्लासिफाइड into on the basis of relief features। तो relief features को नै कि आपण मानकर क्लासिफाई हेसी केतेटा टाइप रे। the relief of broad classification केमिति हेसी on the basis of relief topography। तो ओडिसा रा टोटल सॉइल मेजॉरिटी 8टा टाइप रे डिवाइड करा जाईची। कोन कोन कि मते कहि परिबे? द 8 गुडा आपनकर कोन रहउची? फर्स्ट वन आपण माने जानि सथि कोन ना रेड सॉइल इज द वन, फर्स्ट होची रेड। देन आपनकर कोन आसुची ना मिक्स्ड रेड एंड येलो सॉइल आपनकर आसुची। देन आपनकर आसुची ब्लैक सॉइल, ओके। देन आपनकर आसुची लैटेराइट सॉइल, ओके। देन आपनकर आसुची डेल्टाइक अलुवियल सॉइल। देन आपनकर आसुची कोस्टल सलाइन एंड अलुवियल सॉइल। कोस्टल सलाइन एंड अलुवियल 1 2 3 4 5 6। आउ दीटा कोन आसीबो? ब्राउन सॉइल छाडी देछि, ब्राउन फॉरेस्ट एंड आपनकर मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल आपनकर आसुची ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। देन आसुची कोन ना मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। एति की जिंस क्लियर? टोटल आपनकर केतेटा ना 8टा रहउची। दिस ग्रुप हेल्प द एग्रीकल्चर आपनकर कोन जते एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट माने अछंती से मानको हेल्प करी टू डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। को रीजन रे कोन प्रोडक्टिविटी हेई परिबो। अदरवाइज हमें समस्त कहितां तो सब जगह रे ध्यान दिया लगै दियो, बढ़िया धान चाष हबो। सब जगह रे कोन हेई पारुची कि मैम टिके परसेंटेज गायत्री मु तो विवेकानंद नुह ना, एते सब टोटल 8टा जगह परसेंटेज मेंशन करि पारि, बट हाईएस्ट आपनकर ओडिसा रहउची रेड एंड येलो सॉइल हैला। चलो नेक्स्ट, the soils of Odisha are classified 8. The first one is the parent material, climate and vegetation according. Next mate guo, what type of soil in Odisha is a heterogeneous mixture of eroded materials, red soil, transported soil, laterite soil or the residual soil? Quick कौन कहूची ना ट्रांसपोर्टेड सॉइल जते बेले कैरेक्टरिस्टिक आपन को पचारा जाउची कौन कहि परिबा ना ऑब्वियसली ओडिसा रे जते हेटेरोजेनस मिक्सचर रहउची सेमानु को हमें कहिबा ट्रांसपोर्टेड सॉइल अंडर रे। कोन सब सी मारिचो 27 सी कोथि पई लैटेराइट सॉइल कोन पई हेटेरोजेनस कहिछि पा आपनकर जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल ता माने कोन रहउची से माने आपनकर फ्लो हे की नदी द्वारा पवन द्वारा एमिति रे फ्लो हे की आसी की अलगा सॉइल से तो मिक्स अप हे जानती तांको हमें कोन कहि परिबा ट्रांसपोर्ट हे जानती सेगुडा कोन हेटेरोजेनस इन नेचर थाए।
ओके जे कि कैरी करंती बाय द एजेंट्स लाइक आपनकर रिवर्स हैला विंड हैला ए सब रे हम एलुवियल सॉइल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट हम कहि परिबा कोन ना आपनकर आसी फ्लो करके आसी कि कोन डिपॉजिट हे जानती हैला चल नेक्स्ट what which of the following soils in Odisha occurs in the interfluves mountains and plateaus red and yellow soil red soil residual soil coastal saline and alluvial soil कोन हबो राइट आंसर मते की कहि परिबो soils of mountains and plateaus कौन आसीबो तो ऑब्वियसली आपनकर रेड एंड येलो तो आसीबो नाही बट रेसिडुअल सॉइल आपनकर आसी जीवो ऑप्शन सी वेरी गुड कौन आसुची ना रेसिडुअल सॉइल because residual soils are formed in the situ on the spot from the weathering of the underlying bedrock and thus preserve the character the chat कौन रे character spelling भूल देखी छी CHRACT ठीक है character of the parent rocks in Odisha these soils are typically found in the upland region specifically in the various one एते बेले आपण आसी जाउचंती मते टिके मिस कॉल मारी दो नांडी किए तमे अमित अच्छा asa what kind of soil in Odisha is formed as a result of the weathering of underlying rocks कौन होची red and alluvial soil black soil laterite soil or the brown forest soil what will be the right one jaldi को red and yellow black soil laterite soil brown forest soil तो मानकर आंसर आसुची सी ऑप्शन ए अब राइट आंसर रेड एंड येलो सॉइल कौन पचारि छि कि ना व्हाट काइंड ऑफ ओडिसा इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स कथा पचारि देछि एठी दैट मींस कौन कहबो जेते बेले कहूची अंडरलाइंग रॉक्स कथा दैट मींस आपनकर ब्राउन फॉरेस्ट जेते बेले ता थ्रू सॉइल फॉर्मेशन होची ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल कहूची दीज आर द प्राइमरीली फाउंड इन द फुलवानी कंधमाल रीजन रायगढ़ रीजन में आपन देखा जाए जो कि केमिकल वेदरिंग है कि आपनकर चेंज होता है और नहीं कह मते ना मैम लैटेराइट सॉइल हबो कोथि पई जो ते ह्यूमस लेयर आपनकर लैटेराइट रे काहे आसीबो रेड एंड येलो सॉइल रे तो अधिक आसीबो कोन आसीबो ना रॉ ह्यूमस लेयर आपनकर रेड सॉइल रे अधिक थाए रिलेट करबा में कहा सहित पूरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रॉक रू केमिति रेड हबो तमे माने कोन कहउछो लैटेराइट सॉइल हबो मु तो ताले कहबी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल हेबा कथा मते कुह जेते बेला आसी व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इन ओडिसा इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग एंड अंडरलाइंग रॉक्स जेते बेले पचारि छि रॉक्स कथा अंडरलाइंग वेदरिंग कथा पचारि छि ताल त मु कहबी ब्लैक फॉरेस्ट सॉइल हबो बिकॉज़ दीज आर वेरी प्राइमरीली फाउंड इन द कोन ना आपनकर जो रीजन अछि कलाहांडी रायगढ़ ए रीजन में देखा जाए एंड एटा आपनकर कोथि पई फॉर्मेड ना ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग तो हमें तो याकू रिलेट करे परिबा आपनकर गच्छ जो सब रहउचंती आपनक क्वेश्चन जदी मु आपनको या अकॉर्डिंग न भी कहूची ताहाले लैटेराइट सॉइल कोनोसी हाल रे हबनी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल भी तो हेजिबो कारण आपण माने जानिचंती कोन ना धीरे धीरे आपनकर जते जंगल भितरे गच्छ हैला तार माने पत्थर तळे आपण माने देखुसंती गच्छर पत्र हैला तार किछि ब्रांचेस हैला रही सड़ी आपनकर कोन पूरा चापी हेकी रहउचंती तापर आपण माने देखुसंती ह्यूमस फॉर्म हे जाउची जोड़ा कहूचे बाय द थिक कैनोपी ऑफ द ट्रीज तो तार गछर पत्र हैला तार किछि डेड पार्टिकल्स जो माने रही जाउछंती तो इतु आपनकर 25 सड़ी की ह्यूमस तयारी हे जाउछंती ताल ता आपण माने ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल को रिलेट करबा कथा as far I can give you the proper logic so right answer कौन होबा ना ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल क्लियर चलो फिर भी आपको आउतरे हमें चेक करि देबा तो इठी कोन कहै छै ना रेड एंड येलो सॉइल इज फॉर्मड इन ओडिशा एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग एंड अंडरलाइंग क्रिस्टलाइन and metamorphic rocks in the areas of low moderate rainfall छाड़ो मु आपको 29 क्वेश्चन को आथरे चेक करके तमन को देबे नेक्स्ट मते कुआ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल इन ओडिशा रे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल कोन रहूची कुआ मते द मोस्ट कॉमन सॉइल इन ओडिशा कोन रहिबो the most common widespread soil group जो कि कवरिंग करूची आपनकर 43 to 46% red soil कौन कहि परिबा ना that is the red soil so red soil is the most widespread soil types in Odisha covering the large parts of the interior plateau and hilly region so it is generally light textured
porous and low in nitrogen but suitable for the crops like millets, pulses and oilseeds with proper management. After that, see Mahapack जदि आपण मन नौचंदी 3999 रे आपण मन अवेल करि परिबे all the batches आपण मानकर पळि आसीबा 2 years validity सहित. apart from that आपण मन जदि civil service पे प्रिपेयर करछंदी अधिकारी pre and pre plus mains आपण मन बैच नै परबे. these are the respective price. किछि प्रॉब्लम अछि do contact to this number. आफ्टर दैट आपण माने सुदीप्ता जीके नेटवर्क रे मते फॉलो करि परिबे इंस्टाग्राम रे एंड ए क्लास रा पीडीएफ पाइबा पई आपण मानको ए टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिया को पड़िबो सो दैट क्लास एंड रे म आपण मानको एठी टेलीग्राम चैनल को ऐड करई दोछि हैना शेयर कर दोछि मटे. चलो मैं आंसर टा टिके चेक करिके वेरीफाई करिके आपण मानको प्रोवाइड करि. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. Like though I was not in the good health but still I took the class and आपण माने भी बहुत कोऑपरेट कले सेति पई thank you so much. Have a good day, take care of yourself but first of all do prioritize your parents. This should be your first priority, no one else in the world. Thank you so much. Happy Makar Sankranti again. Bye.